everyone, welcome back to another episode of Sukhan Circle of Story Season 3. Today we have a very special guest with us. The good thing was कि ये पाकिस्तान आ रही थी किसी और काम के सिलसिले में, तो हमने सोचा इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और बुलाया जाए. सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा हमारे एपिसोड के अंदर. जी थोड़ा सा हम तारुफ कराते चले. मिस डेजी रॉकवेल आज हमारे साथ मौजूद हैं. शी इज़ अ पेंटर, शी इज़ एन ट्रांसलेटर, शी इज़ एन ऑथर. जो मुझे सबसे मज़े की बात लगी थी, आपने लिखा हुआ था कि आपका जो तखल्लुस है वो आपने लापता रखा हुआ है. इसके हवाले से मैंने ज़रूर बात करनी है कि वाई लापता, जो एक उर्दू का ऑब्वियसली वर्ड है. इसके अलावा शी हैज़ ट्रांसलेटेड अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू, एंड ऑब्वियसली बीइंग इन पाकिस्तान एंड उर्दू हम देखना चाहेंगे कि कैसी क्या चीज़ थी जिसके वजह से आपने खदीजा मस्तूर के 2 नावलों का तर्जुमा किया है. एंड विल बी टॉकिंग अबाउट जनरली ट्रांसलेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्योंकि उसकी प्लेस अक्सर एक किया जाता है कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है. अक्सर हम बात करते हैं कि लिटरेचर में उसका मकाम जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, बट इस सब के बारे में बात करेंगे. तो अगेन वंस अगेन सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें आज टाइम दिया है. अच्छा, पहला सवाल थोड़ा आई थिंक हम पहले बात भी कर रहे थे, क्लीशेड आता है, लेकिन उसमें ज़रूर जानना चाहेंगे कि यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट्स, पेंटर्स थे, एंड यू नो योर ग्रैंडफादर पेरेंट्स वर आर्टिस्ट एज वेल, एंड यू समहाउ एंडेड अप ट्रांसलेटिंग साउथ एशियन लिटरेचर, बट ऑब्वियसली यू पेंट एज वेल. तो उस जर्नी का थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें तो. हाँ, तो मेरे जो दादा साहब थे मेरे अमेरिका के सबसे मशहूर पेंटर थे, नॉर्मन रॉकवेल. और फिर मेरे जो माँ बाप थे तो दोनों आर्टिस्ट थे भी. और मेरे सारे चाचा चाची वगैरह सब लोग आर्ट थे. लेकिन मैं कैसे तर्जुमान बन गई थी इसको बतलाने की, लेकिन मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, ज़ुबानें पढ़ने का शौक था. और फ्रांसीसी में पढ़ती थी, और लैटिन, जर्मन, कुछ स्पेनिश वगैरह, ग्रीक. तो फिर जब मैं कॉलेज में थी तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ अलग, जो बिल्कुल अलग सी ज़ुबान पढ़ूँ. तो हिंदी मेरी स्केड्यूल में फिट हुआ. और फिर किस्मत की बात थी कि हिंदी से how do I say it, like I just fell in love with Hindi. तो फिर मैंने PhD किया था शिकागो यूनिवर्सिटी शिकागो से हिंदी लिटरेचर में. राइट. और उसके बाद उर्दू की भी सीखी थी stylistic का. तो फिर कॉलेज के दिनों से मैंने थोड़ा बहुत तर्जुमा किया था, लेकिन मैंने ग्रेजुएट स्कूल से मैंने किया था बहुत कुछ, लेकिन मैंने कुछ पब्लिशिंग. राइट. और मैं शायद 10 साल से मैं I published maybe शायद 10 किताबें. हाँ, 10. हाँ, लेकिन मैं पेंटिंग भी करती. और मेरे ख्याल से मेरे जो दादा साहब थे वो इलस्ट्रेटर. राइट. आर्ट, तो इलस्ट्रेशन एक तरीके से तर्जुमा की तरह थे कि आर्टिस्ट एक कहानी लेता है और उससे तस्वीर बना. हाँ, सो उसी तरह से तर्जुमान एक like a story in one language they take and then they bring it into another language, so it's in each case they're showing you what they see. So I have another question. Since you already paint, you already write as well. So looking back, अब हम कहते हैं कि are you able to connect the dots? If this is something that you were destined to do, journey की sense बनती है आपकी? Sometimes it seems completely random. कभी तो ऐसा लगता है कि ये मेरी किस्मत. ये डिपेंड करता है मेरे मूड. अच्छा, टॉकिंग अबाउट, अभी आपने पेंटिंग की बात की थी, सो अभी वी डिस्कसिंग कि आपका तखल्लुस लापता, उसको रखने की कोई ख़ास वजह? मैंने भी एक PhD किया था और उसके बाद मैं एकेडेमिया में गई थी. मैं पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में
founded the University of California in Berkeley, which is, I think I started to feel it wasn't for me after academia meditating तो मैंने फैसला किया कि मैं चली जाऊंगी मैं totally सब कुछ तो फिर एक दोस्त था वरनान आहद वो प्रोफेसर है कॉलम्बिया यूनिवर्सिटी में आज इसकी प्राप्ति लेकिन उन दिनों में तो उनका एक ब्लॉग था उसका नाम था चपाती मिस्ट्री तो उन्होंने बैकलास किया कि मैं उनके साथ कुछ लिखूं कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखूं मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई I don't want anyone to know right so उन्होंने कहा कि आप anonymous रहेंगी और एक handle चुन लो कि जैसे तो किसी को पता नहीं चलेगा तो मैंने लापता तो चुन लिया था इसलिए कि जब मैं चली गई थी एकेडमिया से तो सब लोग पूछते थे कि आप क्या कर रही है कहाँ गए आप लापता हो गए I mean अंग्रेजी में कहते लेकिन मुझे इसका sense so that's how I chose it that I had disappeared from my profession. Interesting story. Yeah. Coming to your translated work, obviously your book Tom of Sand won the Brooker Prize for Translation 2021 में उसको मुझे देख के ना ज़्यादा हो रहा है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट बुक जनरली आपका काम जो है वो किसको हम क्लास 6 में लेके जाते हैं पार्टीशन एरा में वी कंसिडर इट सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि व्हाई दैट व्हाट इज इट इन दैट एरा दैट फैसिनेट्स यू दैट अट्रैक्ट्स यू एंड सेकेंडली why this particular book was an exception then? Okay, so very back to the graduate school में थी वो किताब जो मैंने पहली पढ़ी थी वो एक नॉवेल था जिसका नाम है झूठा सच वो यशपाल का झूठा सच और झूठा सच एक 1,000 कम से कम 1,000 सफ़ेद नॉवेल है बंटवारे थे तो उससे पहले तो मुझे बहुत कम पता था बंटवारे के बारे में लेकिन उस वक्त से तो बहुत बड़ा सा fascination हुआ था उसमें उस ज़माने का और मेरी बहुत सारी किताबें उसके ऊपर हैं लेकिन तुम अब सैन में भी तकसीम है but the interesting story is this has brought ये कि मुझे पता नहीं जब मैंने agree when I said yes तो मैंने सिर्फ पहला कंसर्न मैंने सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ा था और तकसीम आता है तीसरे हिस्से में but still it's very contemporary. So I agreed to it because somebody asked me to. And I think I was following that third one to hit or another thing happened. So one which we got up the account because a UK publisher had asked him about it. They were interested to just BP of the lower. They had heard about Ethan She. So that's because you just talked about कि आपने उसको देखा and then you selected it कि on its merit कि मुझे किताब पढ़ा और मुझे पसंद आई टॉम ऑफ सैंड की बात करते हैं कुछ ओरिजिनल किताब थी so generally what's the process like when you are presented with a book or an opportunity तो आप क्या देखती हैं इस किताब में कि मुझे ये चीज़ें हों तो फिर ट्रांसलेट करने की तरफ में रुझान होगा मेरा या पसंदीदगी होगी उस तरफ ज़्यादातर तो मैं ये सुन लेती हूँ कोई would say they're possibly have they had it or this was an unusual अनोखी बात थी right क्योंकि मैं academic थी तो मेरी जो दिलचस्पी है किताबों में वो ज़्यादातर academic part में है like that seemed to be very visual
लेकिन मैं हमेशा करती हूँ कि बहुत प्यार होना ही मोहब्बत होना है किताब से. Like I have to fall in love with the book because you have to spend so much time with it. कम से कम 10 draft होते हैं हर तर्जुमा में. So you have to really love it and really believe it. And in this process you have external help as well. जब 10 ड्राफ्ट बना रहे हैं तो you are checking with your editor या fellow. Editors तो कम मदद देते हैं. लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मदद देते हैं जब मुझे दिक्कत होती है या कोई लफ्ज़ डिक्शनरी में नहीं मिलेगा तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ट्विटर पे भी तो मैं क्राउड सोर्स करती हूँ. एक और क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अक्सर आता है और एज अ ट्रांसलेटर एज तर्जुमान आप बता सकती हैं, वो ये आता है कि एक बड़ी कॉमन है कि ओरिजिनल वर्क ओरिजिनल होता है और जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि उस ज़ुबान की खूबसूरती होती है, उस ज़ुबान के अपने मुहावरे होते हैं या अल्फाज होते हैं, तो वो जिसको अब क्या जाता है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की अक्सर बात की जाती है. तो उसके हवाले से एज अ ट्रांसलेटर आप किस तरह देखती हैं, इस पर कमेंट किया है आपका, और फिर इस चीज़ को किस तरह हम टैकल करते हैं कि उर्दू का एक मुहावरा है उसको इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं या इंग्लिश में कोई मुहावरा है उसको उर्दू में कैसे कर सकते हैं. तो आप लोग बहुत फिक्र से इसके बारे में जो क्या हो गया है क्या गायब है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें क्या मिल गया. For me, translation is not about losing things, but about finding them. Right. So, अगर एक मुहावरा हो तो ये ढूंढना है कि नई ज़बान में क्या एक्विजिशन है, हम क्या बना सकते हैं. अगर कोई और मुहावरा हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम एक नया मुहावरा भी बना सकते हैं नई ज़बान में. और लोग पूछते रहते हैं कि इस मामले के बारे में क्या हो गया है. और तो फिर आजकल मैं कहती हूँ कि ये समझना है, ये समझना ज़रूरी है कि सब कुछ हो जाए. That's the foundation. ये बुनियाद है कि सब कुछ हो जाता है. ज़ुबान, कहानी, culture, सब कुछ. लेकिन उसके बाद क्या होता है वही दिलचस्प चीज़ है. Very well said, very well said. अच्छा, इसी के साथ एक और भी मेरा अपने जनरल पर्सपेक्टिव इस पर ये भी कई दफ़ा आ रहा था कि हम शायद ये समझते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट था इट्स टू गुड टू बी ट्रांसलेटेड, यानी ये किताब अगर उर्दू में बहुत अच्छी बिकी है, लोगों को पसंद आई है, सो इट्स परफेक्ट. बट व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग तो उसमें आपको अगर कोई इम्परफेक्शन नज़र आती है तो एज अ ट्रांसलेटर आर यू गोइंग टू एड्रेस इट, आर यू गोइंग टू लीव इट एज दिस इट could. You mean like if there's an imperfection or an जी. Oh, well, that depends on कैसी गलती. Right. If it's small, so maybe I fix it with my expertise. But if it's like a big problem, then I can't fix it. But sometimes, continuity issues are not for him. Just say, इस सीन में कुर्सी थी और अगले सीन में कुर्सी खो गई थी. So sometimes I'll put the kursi back here, because translators are also editors sometimes. Right, exactly. That's what I was getting at. You could see, this is some कुछ ना कुछ मिस हो गया जिसे आप कहते हैं. Like अंग्रेजी में तो बहुत जबरदस्त editing का tradition है. Okay. हिंदी में तो बहुत कम editing होता है. Say that we do speech making here. पड़ेगी ज़्यादा एडिटिंग नहीं हो. ठीक है. इसके अलावा जनरली एज अ ट्रांसलेटर व्हाट आर सम ऑफ द गाइडलाइंस, SOPs जिन्हें हम कहते हैं आम अल्फाज में, स्टैंडर्ड्स जिनको आपने कहा कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड इन एवरी केस. Well, I don't know if I'd want to say that, but I mean every translator has their own style. Right. But मैं एक rough draft में बनाती हूँ. लिखती को हाथ से.
or word jump through bahut kharaab hai. It's just literal. Like, you know, I just make sure that everything that was in Urdu of Angrezi Korean. And then after that begins the slow process of polishing. So I always say a translation should have at least 10 drafts. Okay. Because every translation is a journey, right? So it's a long journey because you have to go from one complete text to another complete text that can live on its own. And so if you only go halfway on that journey, then see your new text collapses, like it doesn't work. So it has to come all the way into the new language so that it's able to stand on its own and exist as a piece of writing. Right. So I'm going to talk about particularly about Hindi and Urdu because those languages हमारे context में ज़्यादा relevant है. So उस पे आपका first we'll start with Urdu. What made you translate these two particular novels? Obviously आपने और भी किए, but हम खतीजा मस्तूर के 2 नावलों की बात कर रहे हैं. और इन 2 नावलों में ऐसी क्या खास बात थी और फिर उर्दू के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो ये दोनों तकसीमों के ऊपर थोड़ा बहुत है जी. और मैं उन दिनों में मैंने फैसला किया था कि मैं सिर्फ उर्दू की किताबों का तर्जुमा करूँगी. Right. So मैं ढूंढ रही थी कि उर्दू में क्या क्या करना चाहिए. तो कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन किए थे और खदीजा मस्तूर उनमें से एक था. लेकिन you know, it's not, you can't just translate anything. Copyright permission भी मिलना है. ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए, like तर्जुमान भी. Right. क्योंकि अगर मुसन्नफ ना हो तो फिर उनके जो you know, bene bezier, nieces, nephews, सब तो लोगों से and they can be very difficult. So that's like a big hidden part of our journey is our copyright. We have the Namni Kahani yeah. Right. So Khadija Master मुझे बहुत पसंद आई, मतलब की किताबें और तकसीम के बारे में थी. और फिर उनका जो स्टाइल है मुझे बहुत पसंद है. It's very simple, like very clear writing style that I think translates really well. And what about Urdu as a language? उसको translate करते क्योंकि आप हिंदी में पहले कर चुकी थी काम. मेरी उर्दू तो मतलब it's like not as strong the way मेरी उर्दू which comes out है हिंदी के मुकाबले में in the matter of vocabulary. Right. लेकिन एक तरह से उर्दू ज़्यादा आसान है क्योंकि हर लफ्ज़ डिक्शनरी में मिलेगा. हिंदी वाले तो हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और नए शब्द बनाते हैं. अच्छा. So कुछ मुश्किल हो जाता है. बहुत लोगों से पूछना है कि इसका क्या मतलब है, you know, क्या सोच रहे थे, you know, but Urdu तो it's more set. So generally languages आपको set मिलती हैं या evolving होती हैं? सब languages evolving होते हैं, लेकिन उर्दू के मामले में तो you know, like Urdu literature is quite old. So it's it has a set tradition, and it has good dictionaries. Hindi is really not that old because it's spun off of Urdu. It's really only like 100, 10 years old or something like that. So it's I'd say it's like Hindi is like a rowdy teenager, and Urdu is like a gracious older lady, something like that. And we're talking about languages, evolving languages
कैसी होती है फ्यूचर, जिस तरह हम कह रहे हैं इवॉल्व कर रही है, उर्दू भी किसी न किसी फॉर्म में इवॉल्व कर रही होगी, जर्मन है, फ्रेंच है. सो हाउ डू यू डिफाइन एवोल्यूशन इन अ लैंग्वेज? It has, I mean, people have to be speaking it, right? Because that's where it evolves the most. I mean, writers evolve languages too with their styles, but in some ways they're reflecting what's happening around them. So if people are not speaking the language, then it dies out like that. That Greek, Sanskrit to a certain extent, you know. But everyone's still speaking Urdu and Hindi, so they're still evolving it. And they used to be basically one language, or doing, and you can see the differences a lot now, because I was just in India, and then I'm here. For one thing, in Urdu, everyone's a lot more polite. We are going to offend a billion people. So what it's true, because in Hindi, if you say like, you know, somebody brings you chai, and you say dhanyawad, and they say, ye bas chai hai, you know, kya baat hai. But if I say shukriya, then nobody is like going to fight you. Everybody's very polite about it. So like the words politeness, like saying kijiye instead of karo, and say shukriya, or saying ijazat dijiye, that kind of thing. This is all, there's a lot of politeness built into Urdu. It's still very strong. And then Hindi, it doesn't have that kind of culture. I think Urdu maybe a lot of it comes from the northern India side historically, to Lucknow and even though as you know, sitting in Lahore and Punjabi, we have ruined a lot of it, but suddenly it's still there somewhat. Oh, I'm telling you, it's, you know, the Hindi se kafi zabardast. This show is going to get a lot of views for whatever reason. People have other ways of being polite, you know, but like these particular kinds of words. So talking about Urdu, आपने और भी obviously सनफीन को पढ़ा होगा. So any particular author, writer in Urdu जिसने आपको काम ने आपको impress किया या पसंद किया गया, आपने पसंद किया उसको? Yeah, that I liked, but I haven't chance. जी, as a reader. Okay, so the lady, the Clive T. कि मैं आकर दरिया फंस कर वसरो और कुर्तन हृदय खुद क्या था अपना तर्जुमा, मतलब वो चाहती थी कि और कोई ना करें और वो ही करेंगी और फिर उनके जो literary heirs वे भी देंगी और किसी को इजाज़त नहीं देंगे. तो मैं कोशिश करती रहती हूँ. तो देखेंगे शायद एक दिन किसी दिन मुझे मिलेगा. उसके अलावा उर्दू किताबें आपको पढ़ने में कोई पसंद आई आपको जो? Yes, I like हिजाब इम्तियाज़ अली मेरा एक मनपसंद राइटर सनफ़ा है और मैं उनकी भी कुछ चलें, fingers crossed. I think that already answered my next question, which was कि उर्दू में आप अजीब क्या बनेंगे? Because जैसे मैंने कहा कि copyright मिलना ये काफ़ी मुश्किल है. And so there's always something going on. So I'm always working on copyright permissions to see when I'll get something and then I can work on it. So for future translators who want to do this, one question would be how to go about it. जिस तरह आपने बात की कि challenges आते हैं, लोगों से permission मिलना मुश्किल हो जाता है. So what's the right way to convince, if there is? Well, I think it's easier with living authors. Right. But even then you have to show them what you can do. Of course. So you have to create a sample that's good, and you have to have kind of a rationale of why, if you're a new translator. And they might say no. And so the most important thing is to be prepared for disappointment. You have to have multiple things that you want to do. So I have some translators that I mentor.
So I say, like, you can be monogamous in your relationships, but you have to be polyamorous in your relationship. Because you have to be prepared for these disappointments. And so you have like 4 or 5 things you want to do and keep seeing where it will come through. And of course, the best thing to do is to choose someone who's been dead a very long time. Has done there out of copyright. Yeah, right. Or just say, आजकल मन तो out of copyright thing. Or Premchand bhi hai. Those are good choices. Or just say, Musharraf Ali Farooqi साहब करते हैं. जी वो तो बहुत पीछे चल जाते हैं. उनके जो ऑथर्स होते हैं वो ना सिर्फ फौत हो चुके होते हैं बल्कि वो ना मालूम हो चुके होते हैं. नो बडी पीपल रिमेंबर्स कि ये किताब इसमें लिखी थी. इस लेटेस्ट बुक वो क्लासिक्स का व्हेन एवर यूज्ड टू आस्क हिम कि यार ये किताब किसने लिखी है, ना मालूम. तो मैंने कहा ये आपने अच्छा ढूंढा है. So before we wrap up, any last words? We obviously talked about how to convince someone, but when anyone wants to become a translator, any last message, parting words of guidance for him? Again, I keep stressing this, at least 10 drafts. Right. And the other thing is that you have to realize for a translation to be successful, it's not, people always think it's a question of, it's an accuracy, like that, did you get every word right? That is important. But what's more important is that what you create, translation you create, is something that can exist without being dependent on the source text, so that it can live and breathe on it. Right, great sense. Thank you so much for joining us today. It was lovely talking to you, and thank you for giving us time and sharing your experiences. Thank you so much. Thank you.